Next we talk about another important element that is iron. Okay, where is iron? Fe, here it is, iron. Iron जो है that is required in large amounts in comparison to other micronutrients. ओके तो किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है? सो विल टॉक अबाउट द फॉर्म एज वेल. फॉर्म इज ऑफ Fe3+, जिसे हम कहते हैं फेरिक. Fe2+ is known as ferrous and Fe3+ is known as ferric form. Now what are the functions here that iron does? The function is it is used everywhere in plant body. Okay, it is used for activation of catalase enzyme. ओके, कैटलेस एंजाइम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक्टिवेशन में हेल्प करता है, सॉरी. एंड देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ हाउ डू वी नो दैट इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वो जानने के लिए देयर इज अ रीजन, क्योंकि देयर इज अ वेरी डेफिनेट रीजन कि क्यों आयरन हेल्प करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में. आयरन के एज वी नो देयर आर टू फॉर्म्स, Fe2+ एंड Fe3+. ओके, सो प्लांट जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली इस प्रोसेस को जैसे Fe3+ के साथ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, सो इट विल कन्वर्ट इनटू Fe2+. Fe2+ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Fe3+. सो इन शॉर्ट प्लांट इसी रिडॉक्स रिएक्शन को यूज करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में. ओके, सो इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका रोल ऑल्सो यहाँ पे है बिकॉज इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स सच एज क्लोरोफिल. Okay, so it helps in the formation of pigments like chlorophyll and other pigments. Okay, so we are done with iron. I'll repeat it again कि iron is one of the most required micronutrients, but we'll talk about later कि micronutrients के भी requirement के बारे में. So next we talk about manganese. Manganese. Okay, where is manganese? Manganese is here. Okay, the form जिसमें manganese absorb होता है that is Mn
2 plus. It's also a divalent cation. It's also a divalent cation. Manganese is required in leaves and seeds. प्लस हमने पहले ही रोल पढ़ा था, मैंगनीज plays an important role in photolysis of water. So it plays a important role in photolysis of water, which is a process of photosynthesis. Okay. Okay. So इसका और एक रोल है, it helps in activation. हमने पहले ही डिस्कस करा था कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स involved in photosynthesis and nitrogen मेटाबॉलिज्म जो है. ओके. ओके. सो manganese जो है it is absorbed in the form of Mn2 plus which is a divalent cation. Leaves and seeds में usually found होता है. Means जो this is the part where they are mostly used, manganese. उसके अलावा it plays a role in photolysis of water. Photolysis, so let's talk a bit about photolysis then. मैंने बहुत बार photolysis बोला हुआ है. Photolysis. Whenever you have any doubt in biology, break the words. That helps in extracting the meaning out of it. तो photo का मतलब क्या होता है? Photo का मतलब is light. And lysis का मतलब होता है to lyse. Lyse का मतलब होता है split. So light split इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि when हमारे पास water है और when light comes and hits it, it leads to breaking of water, lysis or splitting of water. This leads to production of electrons जो हम next chapter में पढ़ेंगे photosynthesis में. Okay. That's it for manganese. Next we move to zinc. Okay, zinc. Okay, we move to zinc. Where is zinc? Yes, there is zinc here. Zinc जो form में absorb होता है, it is also absorbed in the form of a cation that is known as Zn2 plus. 2 plus. It's also a divalent cation. Okay. उसके बाद ये है it जो zinc है it behaves as a activator of enzymes, mostly carboxylases जो होते हैं. Zinc is also required everywhere in the plant body.
प्लस एक प्लांट में हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ऑक्सिन. ऑक्सिन जो है वी विल स्टडी इट लेटर इन प्लांट हार्मोन वाला जो चैप्टर है. सो फिलहाल के लिए यू मस्ट रिमेंबर कि जिंक हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिन. Okay, so it helps in the production of oxygen. So let us discuss it again. First we talk about iron. Iron is one of the most required micronutrient, the maximum required micronutrient in fact. उसके बाद जो फॉर्म में वो एब्जॉर्ब होता है वो होता है Fe3+ में, जिसे हम कहते हैं फेरिक आयन. इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट बॉडी में हर जगह है, एवरीवेयर इन द प्लांट बॉडी. इट हेल्प्स द एक्टिवेशन ऑफ कैटलेज. कैटलेज जो है वो एक एंजाइम है विच इज फाउंड इन सर्टेन सेलुलर ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनमें फाउंड है. नाउ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Fe3+ Fe2+ में कन्वर्ट हो सकता है एंड वाइस से वर्सा, तो इसलिए इसे प्लांट वेरी इंटेलिजेंटली इसे यूज करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एज यू नो इज इम्पोर्टेंट बिकॉज क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. सो iron is helpful for formation of chlorophyll and other pigments. Next we come to manganese. Manganese जो है वो भी absorb होता है in the form of Mn2+, which is also a divalent cation. Now this is ferric ion जो है, ferric ion is a trivalent cation. Trivalent cation. Okay, so उसके बाद it plays a role in photolysis of water. Photolysis जो है वो है breaking of water in presence of light, जो photosynthesis का एक very important process है. उसके साथ मैंगनीज जो है वो, क्योंकि वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मोस्टली हमने पहले डिस्कस करा था कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स एंड ऑल. तो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, दैट इज नाइट्रोजन को कैसे प्लांट अपने बॉडी में यूज करता है और कन्वर्ट करता है डिफरेंट फॉर्म्स में, उसमें मैंगनीज का रोल आता है. नेक्स्ट वी मूव टू जिंक. जिंक जो है, जिंक इट्स एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Zn2+. Zn2+, it's again a divalent cation, मतलब the charge is +2 and it's a positively charged, so divalent cation. Zinc है वो, it's an activator of enzymes, mostly carboxylases. Carboxylases are a class of enzymes जिनका फंक्शन है carboxylation, to add a carboxyl group to a specific let's say compound, तो उसे carboxylation कहेंगे. And zinc act as activator of such enzymes. Required everywhere in plant body. Zinc तो universally in plant body है ये. Plus it helps in the production of auxin. Auxin जो है it's a plant hormone. Okay,